वन वेलकम टू लेसन नंबर 75 और आज हम बात करेंगे वोकैबुलरी और रीडिंग। सो स्टार्ट करते हैं दोस्तों फर्स्ट वोकैबुलरी से। फर्स्ट है इम्पोज। देखिए इम्पोज्ड सेट फोर्थ ऑथोरिटेटिवली एज ऑब्लिगेटरी। थोपा हुआ होता है, इसका हिंदी का अर्थ सिमिलर वर्ड है फोर्स या थ्रस्ट आप बोल सकते हैं। सो ये है इम्पोज्ड। उसके बाद सेकंड वोकैबुलरी पे जाते हैं। देखिए सेकंड पे आगे सेकंड है ऑफेंस। ऑफेंस का मतलब एन इलीगल एक्ट। एन इलीगल एक्ट मतलब अपराध या गुंडागर्दी आप बोल सकते हैं हिंदी में। सिमिलर वर्ड है क्राइम या फेलोनी। उसके बाद थर्ड नंबर पे जाते हैं। ये थर्ड एंडाओ। 3 नंबर देखिए एंडाओ। एंडाओ मतलब होता है प्रोवाइड विथ ए क्वालिटी और एबिलिटी। प्रोवाइड विथ ए क्वालिटी और एबिलिटी प्रदान करना आप बोल सकते हैं, हिंदी का अर्थ है सिमिलर वर्ड है प्रोवाइड या सप्लाई। उसके बाद देखते हैं रीडिंग। रीडिंग का मतलब देखिए रीडिंग बहुत अच्छे से करना है और रीडिंग बहुत हेल्पफुल होता है हमारे प्रोनाउंसिएशन और ग्रामेटिकली हमको समझने में। सो स्टार्ट करते हैं। स्पोकन बाय IPS अमित लोढ़ा जी। हाउ police use technology to catch criminals. So I just control my anger, but unfortunately for me, Saman Pratap was a very smart man. He switched off his mobile phone, so he was totally out of the picture. I tried to find out his tower location, cell phone IDs, all those things, and I could find nothing. Then the other guys, Holix, this officer in charge called him also that you switch off your phone because SP is kind doing something with the phone calls. He also switched off his mobile phone for 1 or 2 days, but luckily for me, Holix was having an affair with his sister-in-law. He could not resist talking to her, so he had switched on his mobile phone again and started making long calls to his sister-in-law. And you know, the villagers they get up early in the morning 4 o'clock, and he used to start his romantic talk with her early in the morning 4 to 5 hours of romantic talk.